प्रकार की कोई दिक्कत? सब तैयार है? जाने के लिए तैयार है स्क्वाड? It's India's largest paramilitary force, the CRPF, helping states maintain law and order, especially in counter-insurgency operations and in sensitive conflict zones. And while the men are away on the call of duty, the CRPF Family Welfare Association plays a vital role in providing a support structure to the families of these brave men. CWA CRPF Family Welfare Association came into existence in 1995 to look after the welfare of these families, as the men being away on duty cannot pay enough attention to their home front. And among the aims and objective of the CWA CRPF Family Welfare Association is to skill the CRPF wives and give them a sense of accomplishment. हम महिलाओं के लिए वेलफेयर करते हैं। ये हमारा कावा जो है CRPF वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन है। सो वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं CRPF वाइफ्स के लिए, क्योंकि हस्बैंड्स तो फील्ड में रहते हैं आधे से ज़्यादा टाइम, तो घर में इनको टाइम बहुत मिलता है। तो ये सब जो ट्रेनिंग वगैरह किसी भी चीज़ में लेके ये अपना इनकम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और बिजी भी रहेंगे। कावा में दूसरी ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दिए जाते हैं और बीच बीच में हम स्ट्रेस रिलीफ प्रोग्राम्स भी करते हैं बुला के बाहर से। बैंकिंग के इन्फॉर्मेशन भी दिए जाते हैं। हमारे जो ओल्ड एज जैसे बुज़ुर्गों के लिए बीच में एक ट्रेनिंग वर्कशॉप किया गया था, बैंक के डिजिटल बैंकिंग के बारे में उनको बताया गया था, तो वो भी उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। Skilling women and giving them a sense of empowerment is a common objective of both the CRPF Welfare Association and the USHA Silai School program, and of this common objective has emerged a valuable partnership. Collaboration between USHA and the CRPF Family Welfare Association (CWA) to skill and help in the socio-economic empowerment of the families of CRPF personnel. India is all about masses, and to reach the masses, you need to have support from the government agencies. In today's scenario also, we have a lot of government agencies who are willing to and are looking for opportunities to work with women in rural areas. They are looking at skilling opportunities, and they are also looking at self-sustaining, let's say, micro-enterprises, so that the women or the rural masses can sustain on their own, which would also help, check migration to a great extent. I think on that front, USHA Silai School platform offers a very customized solution for that. Women have been able to open Silai Schools. Then we have also helped many government agencies set up production centers. We've customized the models as per their needs. Some corporates even wanted, some government agencies also wanted uniforms to be made. So for the school children as well as their own employees, that is also being done. The purpose of KAWA is to improve the living conditions and improve the welfare of our CRPF family members. So what happens? Suppose a lady learns something from this skill training course, and tomorrow she thinks of opening a startup, a small business kind of thing, say a tailoring shop or whatever. So she will require some kind of investment and some kind of machinery. So the KAWA has sufficient fund to help her in opening, in starting her business. So sort of capital support will be there. We have several projects, and recently we have tied up with USHA International for giving specialized training to the women family members who are staying in the campus, and they will be giving the specialized training in designing of women clothing, children clothing, so that they can get themselves trained, and in future they can train others also.
so that they get empowered and have an additional income of their own. इस बार 15 महिलाओं, जैसे उन्होंने बोला है, 15 महिलाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग, और भी ज़्यादा इच्छुक हैं करने के लिए ट्रेनिंग, तो बाद में उनको दिया जाएगा। तो ये जो 15 महिलाएं ट्रेनिंग होंगे, ये एडवांस ट्रेनिंग इनको दिए जाएंगे, और एडवांस ट्रेनिंग दिए जाने के बाद इनमें से 3 महिलाओं को चूज़ करेंगे, उनको मास्टर ट्रेनर के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बाकी वो ट्रेन होने के बाद वो दूसरे महिलाओं को ट्रेन कर सकते, खुद के इनकम भी कर सकते हैं और दूसरे भी उनसे मतलब लाभान्वित होंगे। और स्टिचिंग लाइन यहाँ पे आएगा। This skill development program is now a rewarding partnership at 12 locations. One of them, the CRPF's base in Bhubaneswar, Odisha. 40 to 50 women were thoroughly assessed, and of these, only 15 women were selected to enhance their sewing skills. USHA has provided one of its best trainers to further train these 15 women. 40-50 लेडीज़ आए थे, उनमें से चुन के हमने 15 जन को चुना है, और जिनको थोड़ा बहुत सिलाई आता है और उनको हम आगे एडवांस ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो उसी हिसाब से कोर्स मटेरियल भी हम लोग ने जो चूज़ किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है इनका सिलेबस। जिनको थोड़ा बहुत सिलाई आता है, ये एडवांस मशीन में होगा, RSM मशीन में एंड UJ मशीन में होगा। ये जो ट्रेनिंग है, हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसलिए ज़्यादा फोकस हमारा यूनिफॉर्म्स में रहेगा। और जैसे लेडीज़ गारमेंट हो गया, डिज़ाइनर ब्लाउजेस वगैरह, और फ्रॉक, सलवार सूट, तो वही सब में ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी जो बेसिक आइटम्स होते हैं वो सारे सिखाए जाएंगे, होम फर्निशिंग आइटम्स भी सिखाए जाएंगे, कुशन कवर्स हो गया, बैग्स वगैरह, वो सब सिखाए जाएंगे। आज हम लोग का स्टार्टिंग इनॉग्रेशन डे है, तो आज हम लोग स्टार्टिंग पेटीकोट और जो लहंगा से करेंगे, लहंगा का जो घाघरा जो होता है उसी से करेंगे, और मास्क भी बनाना सिखाएंगे अभी बच्चों को, और थ्योरी ड्राफ्टिंग उनका रहेगा, पेपर कटिंग रहेगा, देन कटिंग स्टिचिंग रहेगा। CRPF Welfare Association in partnership with USHA has provided a sewing machine to each and every woman here. This is an advanced level production training of the selected Silai heroes, and for 15 days they will follow a set syllabus which has targets and goals to be achieved and a level of proficiency to be attained. CRPF के साथ हमारा जो शुरू से जो जर्निंग रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, और यहाँ पे जो लेडीज़ लोग सीखने के लिए आ रहे हैं उनका जो इंटरेस्ट देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो टारगेट फिक्स किया हुआ है मैंने, जैसे हम लोग लेडीज़ गारमेंट में इन लोग को परफेक्शन लाना है, एंड यूनिफॉर्म स्टिचिंग में इन लोग को परफेक्शन लाना है। तो ज़्यादातर जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं या स्कूल बच्चों का यूनिफॉर्म तक सिखाते हैं, पर ये जो एक बेस है CRPF का बेस है, तो इनको यहाँ पे इन लोग का जो वर्दी का सिलाई का भी हम लोग सिखाएंगे। तो ये हमने टारगेट फिक्स किया हुआ है कि वर्दी सिलाई तक हम लोग इनको अच्छे से सिखाएंगे। The women of CRPF are learning a new thing each day. For some, the training is utilization of spare time, while for others, it is a chance to make a name for themselves. टाइम जो मिलता है तो सिलाई करती हूँ, और टाइम नहीं मिलने से कैसे होगा। और बहुत टाइम मिलता है मैडम, आदमी लोग को नहीं रहने से खाली बैठना पड़ता है, और बहुत बोर लगता है खाली बैठने के लिए, इसलिए हम सिलाई करने के लिए सोचा। बच्चे बड़े हो गए और खाली समय में क्या करेंगे, इसलिए हम लोग तो सिलाई करने के लिए सोचा। मोबाइल देख के इधर उधर गप्पा मार के टाइम पास करने के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए सिलाई करने से अच्छा है।
10 बजे के बाद जब खाली हो जाते हैं तो फ्री टाइम में कुछ करने के लिए मन कर रहा है ऐसे। This is not the only center. CRPF's Central Reserve Police Force, in partnership with USHA, established training and production centers in 12 different locations of CRPF bases for the wives and widows of CRPF personnel. So far, 90 women in total have been trained and certified from 6 centers in Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Orissa and Tamil Nadu. And the women of other centers will soon get the same exposure because the partnership is getting stronger day by day, and there will be more stories of hope and empowerment that will continue to unfold here. A small village in Rajasthan, just 70 kilometers from Jaipur, called Kishangarh Renwal, 25 enthusiastic women, some of whom have stepped out of their homes for the first time, are part of a training camp. This is another rewarding partnership with USHA. The USHA Silai School, with the government of Rajasthan and the NGO the Unnayan Samiti, have partnered to train 100 women in 4 different districts across the state. इसके साथ साथ क्योंकि ये ट्रेनिंग हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि RKCL के साथ में कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी डिजिटल को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। The partnership with the government of Rajasthan is through RKCL, the Rajasthan Knowledge Corporation Limited, that is a public sector undertaking of the government of Rajasthan that works on empowering and skilling rural women. समाज और देश के उत्थान की जब हम बात करते हैं तो सबसे अहम भूमिका आती है एक महिला की। हम पहले बात करते हैं तो हमें महिलाओं को आगे लाना होगा, तो यही महिला सशक्तिकरण का दिमाग में ध्यान में रखते हुए हमने जब बात की तो उषा इंटरनेशनल से बढ़िया हमें कोई और बेहतर पार्टनर दिमाग में नहीं आया। Women in this camp will be trained in 2 significant areas. Sewing skills is of course the foundation of the course, but also how to repair and run the sewing machines, and to go back to their villages and become Silai school teachers, who will in turn further train other rural women in sewing skills. The women being trained here will be taught how to run Silai school clusters in their villages, which will work as small income generation modules in villages. उषा से जब हम मिले तो उनके द्वारा चलाई गई बहुत सारी स्कीम को हमने देखा, विभिन्न महिलाओं के इंटरव्यू हमने देखे, स्कीम को हमने देखा किस तरह से महिला, एक गांव की महिला जो खेती कर रही है वो फैशन शो तक जा सकती है। वो जज्बा जब हमने महिला का ऊपर उठते हुए देखा, एक अलग पहचान बनते हुए हमने देखा, तो हमें लगा कि उषा ही बेहतर है इस काम के लिए। उषा प्रोजेक्ट में हम पूरे राजस्थान में विभिन्न जिलों से, गांवों से हम 100 महिलाओं को ऐसे चयनित करेंगे। 25 महिलाओं का एक क्लस्टर जयपुर डिवीज़न का आज जिसका एक शुभारंभ हुआ है 7 डेज की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग का। ऐसे ही 25 का क्लस्टर बना के 3 और प्रोग्राम हम करने वाले हैं अलग अलग जिलों में। एक महिला जब सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, गांव सशक्त होगा, देश और समाज आगे बढ़ेगा। और आज भी मैं बहुत सारी महिलाओं से यहाँ इस प्रोग्राम में भी मिली हूँ जो ये बता रही थी कि हम कुछ भी नहीं थे गांव में, इनफैक्ट हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे, और आज हम बोल्डली ये कह सकते हैं कि घर परिवार को हम चला रहे हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था उन्होंने अपने सिस्टम की सिलाई स्कूल के थ्रू कर रखी है। तो ये देख के बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि देखिए समाज में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। 100 such women will be taught sewing skills and how to handle sewing machines across 4 districts in Rajasthan. All these districts, Jaipur, Kota and especially Dholpur and Pratapgarh, have women who come from socially downtrodden communities.
Samiti, the other partner in this project, has played a seminal role in identifying women and bringing them to the USHA Silai School camp. ये लाइन तो फोल्ड हो जाएगी, अगर इसको लेके हम लेंगे तो हमारा जो सेट है वो छोटा पड़ जाएगा. Unnayan Samiti, an NGO that works on women's issues, especially health and social empowerment, is a key facilitator of this partnership with USHA and the government of Rajasthan. पहले लंबाई लेंगे, जितनी हमारी लंबाई होगी. From identifying and mobilizing women, the NGO Unnayan Samiti will ensure there are no dropouts during the training. मान लीजिए हमारा कंधा 18 इंची है, तो 18 का आधा कितना हुआ? 9. The NGO will also do a follow-up to see that women practice the skills learned here and will be monitoring agency following the work of these women even when they go back to their homes. यहाँ से सस्टेनेबिलिटी का अगर हम बात देखें तो ये कैसे सस्टेन होगा प्रोग्राम. देखिए, ये अभी प्रोग्राम हमने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद इनका इनॉग्रेशन के बाद ये अपने घरों में इसको एस्टेब्लिश कर लेंगे. उसके बाद में हमारी जो टीम होगी, उन्नयन की जो टीम होगी, वो उनके साथ में कंटिन्यूएशन में संपर्क में रहेंगे, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे. हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के साथ साथ हम हर महीने उनसे MIS लेंगे, हम देखेंगे उनको किस तरह की और सपोर्ट की आवश्यकता है. मार्केट सेलिंग करना तो वो करना है, और कुछ स्किल्स की जरूरत है तो वो हम स्किल देंगे, लाइफ स्किल के स्किल्स देंगे, IT के स्किल्स देंगे. Selecting women for this camp is also crucial, and Unnayan Samiti has tried to help in this partnership with USHA, women who are economically and socially backward. USHA की तरफ से क्राइटेरिया है कि ज़रूरतमंद होगी महिला, या विडो होगी, विकलांग होगी, या फिर और कोई गरीब परिवार से होगी, और वो सिलाई में काम करने की इच्छुक हों, अपना स्वरोजगार चलाने की इच्छुक हों सिलाई स्किल में, तो उसके लिए हम सिलेक्शन करते हैं. For many women, this camp is the first time they have stepped out of their homes. For many, it's a time to meet other women like themselves and work towards a better future. The Silai School will not only equip them to stitch and sew, but they will also be able to train other rural women for a small fee, which will be an additional income generation model for them. मैं यहाँ को सीखने के लिए आई हूँ, मेरे घर की हेल्प करने के लिए आई हूँ. मेरे घर में ऐसी कंडीशन ऐसे ही चलती है, मेरे पति कम कमाते हैं. मैं आगे सिखाऊंगी और चलाऊंगी और खुद कमाऊंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी. मेरे घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी ऐसे ही है, ताकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा मतलब सिलाई करके जैसे थोड़ी अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा और अच्छा कर सकूँ. तो जैसे थोड़ा सिलाई करके मैं मतलब थोड़ा खुद के लिए कुछ करूँ, बच्चों के लिए. मतलब सिलाई से हमारी जो आमदनी होगी, सीख के जो हम मतलब पैसे की जो परेशानी है उसको दूर कर पाएँ. Women here are learning to work in groups to help each other. A story which is also the basis of the USHA Silai School partnerships. Valuable relationships where partnering for a common cause helps to take the aim of USHA skilling and empowering women to greater heights.